So the next step is strategic planning. The scope of industrial engineering कर रहे थे हम, और scope के अंदर जो next scope है that is strategic planning. In strategic planning, to develop long range planning model, like what do you expect after 5 to 10 years as a scope. If you talk about this college, what do you see after 5 to 10 years? You may see diploma college, you may see that law college is already inside. So you can see number of things like our college becomes a university. Such type of planning is called strategic planning. When you see, take a 5 to 10 years of time span and aim something according to that. Model all areas affected by operation. तो जो एरियाज अफेक्ट हो सकते हैं उनको मॉडल करना, लाइक स्टडी पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट कौन सी है, व्हाट टाइप ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट्स आर देयर. इफ यू प्लान टू मेक इट अ यूनिवर्सिटी और यू वांट टू ऐड सम डिप्लोमा कॉलेजेस, यू विल प्लान अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल जो पढ़ना चाहते हैं वो क्या पढ़ना चाहते हैं उसके हिसाब से. To identify the anticipated investment in plant. So if you plan something, you have to invest something for that. If you want to increase the capacity of this college, you need to purchase more land. आपको ज़्यादा जगह खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा. Suppose you go for some diploma in mechanical, so you need to have some labs of mechanical and so like that. So that investment you have to do that, and to tie the preliminary production cost and operation cost to it also. तो जो कॉस्ट आने वाली उसको पहले ही सोच के रखना पड़ेगा. ऑपरेशन आप पहले जो बिल्डिंग के ऊपर खर्चा आने वाला, जो इक्विपमेंट्स उनके लिए खर्चा आने वाला है, एंड फाइनली हैव टू ऑपरेट इट. ऑपरेशन के लिए खर्चा आएगा, जो फैकल्टीज एंड ऑल दैट, जो स्टाफ होगा उसकी सैलरीज एंड ऑल दैट, लाइक दैट. तो आप इसको एज ए इंडस्ट्री भी ले सकते हो. तो फोरकास्टिंग ऑफ दी to develop preliminary financial inputs, impact, including profitability and ROI, rate of interest. ROI is rate of interest. If you add some, you are taking some loan, so rate of interest आपको पड़ेगा. The strategic planning was management of change. To ensure the change programs are coordinated, support one another, and move along critical paths. तो अगर हम प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं, चेंज इन प्रोग्राम, तो आपको जो नया आपने प्रोग्राम शुरू करना है अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा. टू क्रिएट एंड मेंटेन द इम्परेटिव फॉर द चेंज एंड एस्टैब्लिश प्रायोरिटी एंड प्रोवाइड विजिबल स्पॉन्सरशिप फॉर द चेंज. जो चेंज की बात कर रहे हैं, earlier 10 years back there was a great demand for 5 years back, great demand for the Swift car in Punjab or India. Now at this moment, after 5 years, the demand for Swift is decreased and the demand for Creta is increased. Similarly, demand for Swift is decreased, Brezza is increased. So there is a change in the society for the product. Product के अंदर जो प्रोडक्ट की चॉइस में चेंज आ गई सोसाइटी के अंदर. पहले स्मॉल कार पसंद थी, अब कॉम्पैक्ट एसयूवी पसंद है लोगों को. तो उस सारे को चेंज को देखना और उसको इंकलकेट करना है. दैट इज क्रिएट, मेंटेन एंड इम्पोर्टेंट फॉर द चेंज एस्टैब्लिश एंड प्रोवाइड विजिबल कंट्रीब्यूशन. तो उसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, जो हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो इट शुड बी प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट. To provide a skill, knowledge, process, organization, structure and tool required to deliver the change. तो जो रिक्वायरमेंट थी स्विफ्ट की और जो रिक्वायरमेंट फॉर ब्रेजा है वो डिफरेंट रहेंगे.
तो जो टूल्स एंड ऑल दैट रिक्वायर्ड है, वेल्डिंग इक्विपमेंट, वो आपको सारा परचेज कर सकते हैं। टू इंश्योर दैट द इंडिविजुअल इन्वॉल्व बाय इनटू द टीम, तो जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, जो पहले शिफ्ट के ऊपर काम कर रहे थे, वो चेंज कर दें ब्रेजा को मैन्युफैक्चर करने के, एंड अडॉप्ट द बिहेवियर। देन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, to determine production cost using specific cost-based methodology. तो प्रोडक्शन कॉस्ट को एस्टिमेट करना कैसे, तो दैट इज किस चीज़ के ऊपर कितना खर्चा है, एंड कैलकुलेट ऑल दीज कॉस्ट एंड व्हेन यू डिटरमाइन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर thing. To develop budget forecast for the operating cost center, तो आपको बजट आपको मेंशन करना पड़ेगा forecast of operating cost center. Cost center like सर्विस सेंटर होते हैं, कॉस्ट सेंटर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको उसका रिप्लेसमेंट भी देना पड़ेगा खराब होने के लिए, उसकी सर्विस भी देनी पड़ेगी, वो ठीक भी कराना है। तो वो जो वाया वॉशिंग मशीन, हमने वॉशिंग मशीन खरीदा है तो वो ख़राब भी होगा एंड इट नीड्स मेंटेनेंस ऑल्सो, तो आपको उसके सर्विस सेंटर भी में आना पड़ेगा। तो मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस बजट गोल, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी और जो बजट के गोल थे उन दोनों को कंपैरिजन करना, जो परफॉर्मेंस एक्चुअल में है और जो बजट के अंदर हमने शो किया था उन दोनों को व्हाट इज द वेरिएशन इन दैट, वो स्टडी करना। टू डेवलप कैपिटल एंड एक्सपेंस बजट फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन, व्हेन यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट, जैसे मैंने आपको पहले बोला था दैट क्रेटा वाज केम इन 2015-16, but it was not popular at that time. It has become popular in 2018, 19 and 20 on. So that's why जो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज की होगी उन्होंने, पहले कम बनती होगी अब ज़्यादा बन रही है, तो उसके लिए जो खर्चा इन्वॉल्व है, एक्सपेंशन इन्वॉल्व है, उनके बारे में स्टडी कॉल्ड फाइनेंशियल, परफॉर्म कॉस्ट एनालिसिस एंड जस्टिफिकेशन फॉर कैपिटल एंड एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, एंड यू नीड टू तो जो पैसा खर्च होने वाला है उसकी कॉस्ट एनालिसिस करनी, कहाँ पे कौन सी चीज़ लग रही है, ऐसा नहीं कि अनअकाउंटेड मनी जाती आ रही है। टू परफॉर्म मेक वर्सेस बाय वर्सेस लीज एनालिसिस, आइदर यू मेक इट, आप बनाते हो तो उसके ऊपर कितना खर्चा है, आप बाहर से खरीदते हो उसके ऊपर कितना खर्चा है, अगर आप कोई जगह आपने लीज पे ली उसके ऊपर कितना खर्चा है, उस सारे को एनालाइज करते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे जो 11 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। These 11 steps that we have covered financial तक, so next part is organization of an industrial engineering department, तो कैसे organization कैसे काम करती है। The organization of industrial engineering department depends on 3 steps, तो organization है जो 3 steps के ऊपर काम करती है। First, the authority, the responsibility, the accountability of the department must be clearly mentioned. अब authority, responsibility and accountability, we talk about this college. Authority is principal, responsibilities of HOD, accountabilities of HOD. If I don't deliver a lecture, accountabilities of HOD. If I am not able to make you understand what I am teaching, then again responsibility is either me or my HOD. So there has to be someone who is having authority. Authority is lying with the principal. Responsibility होनी चाहिए किसी न किसी के पास, accountability होनी चाहिए, right? Of the department must be clearly mentioned. तो किसके पास कौन सा काम है, that is the responsibility and accountability. You want to अपने कॉलेज की बात करें, if you want to go for training and placement, the accountability and responsibilities of RG sir. You know that. So this is authority, responsibility and accountability. Department must be integrated in the company plan of the organization.
डिपार्टमेंट मस्ट बी इंटीग्रेटेड। देखो जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड होने चाहिए। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, मशीन शॉप, पेंट शॉप एंड ऑल दैट, ये सारे आपस में इंटरलिंक होने चाहिए। एवरी प्रोविजन मस्ट बी मेड सो दैट डिपार्टमेंट कैन इफेक्टिवली परफॉर्म इट्स असाइंड टास्क। तो हर काम प्रोविजन बनना चाहिए, हर प्रोविजन बननी चाहिए कि वो जो डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उसका काम इजी हो जाए। अब देखो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन टीचिंग, तो इस अगर जूम हमें नहीं मिलता है कॉलेज की तरफ से, तो प्रोविजन नहीं दिया गया, हमें प्रोविजन दिया गया जूम का। आप चाहे 2 घंटे या 3 घंटे जितना मर्जी लेक्चर ले, यू कैन डिलीवर इट इन वन गो। यू कैन टेक अप attendance also, you can take recordings also, you can take you can even add polls also। तो कुछ भी कर सकते हैं आप इसके अंदर। तो प्रोविजंस देने पड़ेंगे आपको डिपार्टमेंट को, सो दैट वो जो भी काम मिले उनको अच्छी तरह कर सकें। जो डिपार्टमेंट है, चाहे मशीन शॉप लगा लो, अगर आप मशीन शॉप में काम कर रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम जो मशीन है उनकी ओवरऑलिंग एंड उसको जो टूल्स हैं उनको रेगुलरली आपको चेंज करके देना पड़ेगा। सो ऑन। In an industry, the industry engineering department may typically have following organization structure। तो ये organization structure है in case of industrial engineering department। Chief industrial engineer, बस total इस प्लांट का जो chief industrial engineer उसके अंदर कैसे काम करें। The duties of chief industrial engineer establish priority for the project, establishing priorities for the project। क्या है, आप कोई प्रोजेक्ट नया है, ठीक है, प्रोजेक्ट यानी कि कहीं पर सीएनसी मशीन लगनी है, बिग डाटा लैब एस्टेब्लिश होनी है, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो चीफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर विल डिसाइड कि व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ दैट सिविल प्रोजेक्ट, कहाँ पे काम पहले होना चाहिए, राइट। प्रोग्रामिंग द वर्क, प्रोग्रामिंग किस फेज के साथ काम होना चाहिए, कितने देर में कौन सी चीज हो जाए, पहले दिन क्या होना चाहिए, दूसरे दिन एंड सो ऑन, प्रोग्रेस ऑफ दैट। देन रिव्यूइंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। जब आपने प्लान कर लिया, प्रोग्राम कर लिया, प्रोग्रामिंग द वर्क, फिर कितना टाइम में कितना काम हो गया, हमने क्या डिसाइड किया था कितना हो गया, राइट। जैसे हमारे यहाँ पे आईईएम का, आईईएम अमृतसर का काम था, ठीक है, तो इट वाज शेड्यूल्ड के वो दिसंबर तक खत्म हो जाए, लेकिन आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू कंप्लीट इन दिसंबर, टिल दिसंबर। तो दैट वाज प्रोग्रामिंग के दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, ये काम इतनी देर में हो जाएगा, ये काम इतनी देर में हो जाएगा, ये काम इतनी देर में, बट एक्चुअल में वो ऐसा हो नहीं पाएगा, है ना। तो रिव्यूइंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इज लाइक दिस। आप कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं, यानी कि आईएम का किसी ने काम दिया, दैट इज अ प्रोजेक्ट फॉर रैम। तो किस तरीके से फाउंडेशन कितनी देर में हो जाएगी, फाउंडेशन के बाद पिलर्स कितनी देर में खड़े हो जाएंगे, सो ऑन लाइक दैट। तो चीफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर के अंदर देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, से मेथड सेक्शन, टाइम स्टडी सेक्शन, ट्रेनिंग सेक्शन, वेस्ट प्रोग्राम सेक्शन, प्रोडक्ट सेक्शन एंड ऑपरेशन सर्च सेक्शन। तो ये 6 सेक्शन इसके अंदर आते हैं चीफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर के। मेथड सेक्शन के अंदर क्या है, ऑपरेशन एनालिसिस, जो ऑपरेशन हो रहे हैं, वेदर टनलिंग, वेदर ड्रिलिंग, बोरिंग, तो ऑन, उनका एनालिसिस, कितनी देर में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। मोशन स्टडी, जो प्रोडक्ट हमारा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो कम से कम टाइम में जाना है। मटेरियल हैंडलिंग, यू मस्ट हैव समथिंग दैट automatically that material should transfer from one place to another। एंड प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट ऐसा बनाना है कि मिनिमम टाइम वेस्टेज हो और मिनिमम मोशन हो। तो ये मेथड सेक्शन है, ये भी चीफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर के अंदर आएगा। देन टाइम स्टडी सेक्शन, टाइम स्टडी सेक्शन वाले क्या करते हैं, वो टाइम स्टडी करते हैं कौन सी चीज में कितना टाइम लग रहा है। टाइम स्टडी ऑफ द डायरेक्ट लेबर, एक लेबर कितनी देर में क्या काम कर रहा है। मेजरमेंट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर होते हैं जैसे जो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वे वो काम करते हैं, जैसे कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई स्क्रू टाइट कर रहा है, कोई नट बोल्ट कस रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, पेंट शॉप के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस आर देयर जो अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन
रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, दैट इज बीइंग अनलोडेड फ्रॉम आउटसाइड पर्सन, तो बाहर से रॉ मटेरियल है उसको अनलोड करवा रहे हैं, लोड करवा रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्टली, जो अंदर नहीं होती लेकिन बाहर काम कर रही है। मेजरमेंट ऑफ मशीन इंटरफेरेंस, तो मशीन की मेजरमेंट कितना टाइम, कौन सी मशीन, एक टूल जो प्रोडक्ट बनता है फिर नया टूल लगता है, तो उस सारे को मेजरमेंट करना, टाइम कितना लेगा। देन ट्रेनिंग सेक्शन, ऑपरेटर ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जो 10 साल पहले गाड़ियाँ थी और 10 साल आज जो गाड़ियाँ हैं, उनकी जो आजकल की जो ज़्यादातर गाड़ियाँ कंट्रोल यूनिट के ऊपर चलती हैं, कंप्यूटर के ऊपर चलती हैं इसका, ठीक है। अगर आप पुश बटन दबा रहे हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है, चाबी के साथ स्टार्ट होती है। तो वो जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, इसकी ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी अपने जो हमारे लेबर वर्कर्स हैं, तो वो ट्रेनिंग कम अंडर दिस ट्रेनिंग करते हैं। सुपरवाइजर ट्रेनिंग, अगर वर्कर ट्रेनिंग कर रहे हैं, राइट, तो वर्कर को बताना तो सुपरवाइजर ने, पहले सुपरवाइजर को आता होगा फिर ही वो ऑपरेटर को बताएगा, ठीक है। देन वेस्ट प्रोग्राम सेक्शन, एक्चुअली ये वेस्ट नहीं होगा, ये वेज वेज प्रोग्राम सेक्शन होगा। जॉब वैल्यूएशन, जो काम कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन करनी है, व्हाट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे आर मैन्युफैक्चर, राइट। उसके बाद वेज इंसेंटिव, उनको क्या वेजेस मिल रहे हैं और इंसेंटिव्स क्या मिल रहे हैं, एंड मेरिट रेटिंग। आप अगर कहीं एसबीआई में चले जाएं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस परफॉर्मर ऑफ द वीक ऐसा लिखा होता है, नीचे एक नाम लिखा होता है, तो मेरिट रेटिंग इज लाइक दैट। तो आप हर हफ्ते अपने बेस्ट एम्प्लॉय का जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है उसका नाम लिख के देते हैं, दैट इज मेरिट रेटिंग ऑफ द एम्प्लॉय। प्रोडक्ट सेक्शन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, टूल डिज़ाइन, प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, देन टूल को डिज़ाइन करते हैं, एस्टिमेटिंग, इक्विपमेंट सिलेक्शन, देन ऑपरेशन रिसर्च सेक्शन। देन इन दिस केस आप मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज करते हैं टू चेक दी फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो किस तरीके से साथ हम काम इजीली कर सकते हैं, इसके लिए ऑपरेशन रिसर्च यूज करते हैं, राइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। What qualities industrial engineers should have? First quality is inquisitive mind, negotiation skills, listening skills, creative problem, then diplomacy, patience, then ability to adapt to many environments and interact with a diverse group of individuals. Ability to adapt to many environments and interact with a diverse group of individuals. Good common sense. Continuous desire to learn, leadership skill. तो जो एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो बन रहा है उसके अंदर ये स्किल्स होंगी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्विजिटिव माइंड। इफ एनीबॉडी नोज यू कैन रिप्लाई। आप ना, यस सर। हाँ जी बोलो बोलो। सर, नई चीजें जानने की इच्छा। वेरी गुड। एबिलिटी टू नो न्यू थिंग्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड नो अबाउट द न्यू थिंग्स। गुड। तो इंक्विजिटिव माइंड है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो नई चीजें सीखने का इच्छुक हो। ऐसा ना हो कि नहीं काम, नया काम आ जाए तो वो करे, नहीं नया कर ही नहीं सकते। नया काम तभी कर पाओगे अगर आप ऐसा दिमाग रखते हो कि नया काम करने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो इंक्विजिटिव माइंड इज लाइक
नेगोशिएशन स्किल्स, नेगोशिएट करना, जस्ट लाइक बार्गेनिंग, नेगोशिएट करना कि if someone asks you I will give her that pen for 15 rupees, आप you start negotiating with that him, I will give you 10 rupees, 13, 12 and so on like that. Then listening skills, very few people have a listening skill. Abhi, when we are attending this lecture, I don't know how many of you are listening to me. Very few people have listening skills. जो very बहुत तरीके के साथ बात को सुनते हैं, समझते हैं. कुछ सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं because they want attendance, might be keeping their mobile phone aside just by connecting to the link, right? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ मोबाइल पे लिंक को क्लिक करके चला के मोबाइल का जो माइक का ऑफ करके साइड पे रखा, ठीक है. कुछ ऐसे होंगे, कुछ होंगे जिन्होंने कान में लगाए होंगे एंड दे माइट बी ईटिंग देयर फूड एंड ऑल दैट, ध्यान उनका नहीं है. और 32 में से आई डोंट थिंक कि 5 to more than 5 to 6 स्टूडेंट्स होंगे जो ध्यान से सुन रहे हैं. तो लिसनिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फॉर बिकमिंग एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर. क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, नई नई प्रॉब्लम आती रहेंगी. कैसे मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हेन यू आर इन सम से वर्कशॉप, कार्स की वर्कशॉप में जाओ, स्टे देयर फॉर वन आवर एटलीस्ट. जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं उनकी प्रॉब्लम सुन के देखो, तो यू विल बी सरप्राइज कि इसका सोल्यूशन क्या होगा. ठीक है. मेरी गाड़ी जब 60 क्रॉस करती है, कुछ ऐसे बोलेंगे, मेरी जब गाड़ी 60 क्रॉस करती है तो वाइब्रेट करना शुरू करती है. कोई कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं. तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन, ये आपके दिमाग में क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि नई नई प्रॉब्लम आ सकती है, उनको सॉल्व कैसे करें. डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी क्या है कि आपने अपनी बात रख भी लेनी है और दूसरे की भी बात सुन लेनी है. डिप्लोमेसी क्या होता है, and two people are saying, one is saying yes you have to do it and other one is yes you should not do this. तो आपके दोनों बेस्ट फ्रेंड, आप उन दोनों को कन्विंस कर लें कि कोई तीसरा रास्ता है कि ऊपर ले. तो दैट इज डिप्लोमेसी. पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि जो देयर इज सम प्रॉब्लम, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो क्रिएटिव ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी आपने पहला ही सोल्यूशन दिया तो सॉल्व हो जाएगा. पेशेंस रखना पड़ेगा. 1 2 3 आइटरेशन होंगी, दूसरा या तीसरा चांस होगा जो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कर पाएगा. ability to adapt many environments, interact with the diverse group of. तो आपको नंबर ऑफ एनवायरनमेंट्स के अंदर काम करना पड़ता है. आपको एसी के अंदर भी बिठाया जा सकता है, आपको बाहर भी बिठाया जा सकता है. दैट इज एनवायरनमेंट. एंड you may be asked to talk to individual who can only speak in English. You may be asked to go to Japan and talk to a Japanese company के वो you are in a Japanese company, तो आपको उनको हैंडल करना है. तो you must have that much of confidence only to talk to them like this. Good common sense अच्छी होनी चाहिए. Continuous desire to learn, कुछ नया सीखने की डिजायर होनी चाहिए. लीडरशिप स्किल, यू शुड बी अ लीडर. लीडर कैसे, जैसे आप क्लास में बंक कराते हैं, एक पर्सन बोलता है आज हम क्लास नहीं लगाएंगे, सारे पीछे हो जाते हैं. तो दैट वन पर्सन हु इज सेइंग कि आज हम क्लास नहीं लगाएंगे, दैट इज अ लीडर. तो ऐसे स्किल्स होने चाहिए, राइट, फॉर अटेंडिंग द क्लास, नॉट फॉर नॉन अटेंडिंग द क्लास. आगे कंटिन्यू हो रहा है. आगे के क्या उसके क्वालिटीज होनी चाहिए. रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सफुल यानी sometimes you met a person who can give you a solution to any problem. So that type of person you should be. Resourceful person, आपकी knowledge इतनी अच्छी होनी चाहिए. If you talk about let's talk about me, I can give you advice on fluid mechanics, CAD CAM,
and fluid machinery, or applied thermodynamics. Only that's it, right? Some of the faculty member may be वो आप उनसे कोई भी सवाल पूछो, कौन से भी सब्जेक्ट का पूछो, they will be able to answer all this. So that type of person is required, resourcefulness, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है. डिज़ायर फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड आप एफिशिएंसी की डिज़ायर होनी चाहिए कि मैं ज़्यादा एफिशिएंटली काम करूँ. अगर मैं 3 घंटे काम कर रहा हूँ तो 3 घंटे में मेरी आउटपुट 100% निकली. गुड मैथ स्किल्स, आपको कैलकुलेशन कंटिन्यूसली करनी पड़ेंगी तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए. सॉरी, मैनेजमेंट स्किल्स, स्ट्रॉन्ग टाइम मैथ स्किल्स एंड स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है. जो लीडरशिप के स्किल्स होते हैं वही मैनेजमेंट के स्किल्स भी होते हैं. समटाइम्स आपकी जो लेबर है तो आपको किसी न किसी तरीके से उनसे काम करवाना, somehow if and but उनको कन्विंस करके काम करवाना पड़ता है, बिकॉज लेबर डजंट वांट टू वर्क. उनसे कैसे काम करवाना है, दैट इज अ वर्क ऑफ अ मैनेजर. मैकेनिकल एप्टीट्यूड, you should have a good aptitude also. Excellent communication, salesmanship, आप अगर किसी चीज़ को सेल करना चाहते हैं कैसे सेल करनी है वो अच्छा होना चाहिए. क्वान्टिटेटिव स्किल्स, टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज, टेक्निकली आप साउंड होने चाहिए. जो आप लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑटोमोबाइल सेक्शन, तो ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए. कंटिन्यूस ड्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट, वही बात है कि हम हमेशा अपने डिज़ायर को इम्प्रूव करना है, इसमें वो होनी चाहिए. पैशन फॉर इम्प्रूवमेंट, सेम है. कंटिन्यूस ड्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट, पैशन फॉर इम्प्रूवमेंट, ये भी सेम है. देन कंटिन्यूस डिज़ायर टू लर्न, ये भी सेम चीज, ठीक है. तो दिस इज क्वालिटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर. तो ये कंप्लीट है. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी. Now, before moving next to next slide, let us take one poll. Is it visible to you? Hmm. So we belong to that company, or we belong to the Amritsar College of Engineering and Technology. So we represent the college. So that's a person who cannot represent an organization. So that is metaphorical image of analytical description. When you describe an object analytically, right?
normative underpinning. So analytical and predictive explanation, solution to be implemented, social interpretation. You just have a look at these. So, though they are not in your syllabus, मैंने एक दो स्लाइड ये डाल दी हैं. Then methodological issues, other issues. All theories of organization and management are based on simplified image and metaphor that proceed as see, understand, imagine situation partially. Metaphors create insight, but they also distort. They have strength, but they also have limitation. What is metaphor? Metaphor is an again an image you create when you let's discuss this in that way. When you have taken admission in ACAT, you might be having some image of ACAT Global Satyam Babakuma Singh in your mind. So that is a metaphor, the image of that particular institution or particular industry. तो हो सकता है ऐसा ना हो, may change the image, right? But they also have limitation. Creating ways of seeing, they create ways of not seeing. Hence, there can be no single theory of metaphor that is an all-purpose point of view. There can be no correct theory for structuring everything we do. तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर एक फिक्स पैटर्न है जी, ये काम ऐसे ही होगा. हर इंडस्ट्री का देयर कैन बी अ डिफरेंट वे जिसके साथ वो काम इजी हो जाए. आप अगर कील बनाने वाली कोई फैक्ट्री में चले गए तो उसका जो अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लगाएंगे तो वो अलग हो जाएगा. इफ यू गो टू सम बिगर प्लांट से जहाँ पे जेसीबी मशीन बन रही है, अगर वहाँ पे आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लगाएंगे तो दैट विल बी अ डिफरेंट. तो हर पॉइंट हर जगह पे सेम थ्योरी नहीं लगेगी. इट विल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू. so this is your first chapter of industrial engineering and management. तो सेकेंड चैप्टर है इसका, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं. इसमें मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. मैनेजमेंट स्ट्रेटजी प्लानिंग, इसके अंदर प्लानिंग पढ़ेंगे. पहले मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, देन प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे. 2-3 टाइप्स कवर हो जाएंगे इसके अंदर. पहले मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं. Management is a distinct process constituting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings, other resources. तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं, परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो रहा है कि नहीं. राइट? ऐसे होगा. Let us take an example of our college. Management, the chairman of this college is planning that the results of this college should be 100%. Right? Then उसकी उनका प्लान, ठीक है, तो उसको वो ऑर्गेनाइज करते हैं. Then he takes autonomous to make the students or to give them 100% result. तो पहला थिंग जो उन्होंने किया कि let us take autonomous, हम खुद पेपर डालेंगे, खुद करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे पास हो जाए. राइट? फर्स्ट थिंग इज दिस. तो एक प्लानिंग करना है. पहले क्या करना चाहते हैं प्लान कि 100% बस जो स्टूडेंट्स हैं वो पास होने चाहिए. मेरे कॉलेज में जो पढ़ेगा वो पास होकर निकले, पढ़ के निकले और पास हो. दो ही इज नॉट इन द फेवर ऑफ चीटिंग, बट वो चाहते हैं कि वो हमारे जो कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है पास होकर. राइट? तो उसके लिए नंबर ऑफ प्रोसेस वो डिवाइस करते रहते हैं टाइम टू टाइम. ऑनलाइन कोर्स टेस्ट हो रहे हैं एंड ऑल दैट उसके अंदर.
तो दिस इज, फिर उसको कंट्रोल कैसे करना है, सिस्टम कंट्रोल डाइल्यूट ना हो जाए, ठीक है, वो कंट्रोल भी करते रहते हैं कि जो टीचर पढ़ा रहा है वही पेपर डाल रहा है, तो उस तरीके के साथ इसको मैनेज किया जाता है। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बाय द यूज ऑफ अदर। Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently to accomplish the desired task. तो जैसे when you are talking about मैनेजमेंट की, तो हमारे कॉलेज में मैनेजमेंट ऐसा चाहता है कि अच्छी पढ़ाई हो, बेटर रिजल्ट आए, उसके लिए इन्वायरमेंट भी देता है वो। कैसे? आपको क्लासरूम के अंदर एसी दिए, तो दैट इज एन इन्वायरमेंट, एयर कंडीशन रूम्स दे दिए, देन फैकल्टी रूम्स के अंदर भी एसी लगा दी, जो पढ़ाने वाले हैं जो पढ़ने वाले हैं दोनों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तभी वो अच्छा पढ़ पाएंगे, अच्छा काम करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल सब सिस्टम विच मॉडल्स ऑल नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ organizational activity such that this model may be used for prediction, planning and monitoring of organization as a whole। तो मैनेजमेंट के अंदर हम सब सिस्टम को बना लेते हैं। सब सिस्टम क्या है? Chairman is there, principal is there, we have made a subsystem, BSc department, computer department, electronics department and so on, छोटे छोटे सब सिस्टम में है, तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। एचओडी देखते हैं अंदर का सिस्टम डिपार्टमेंट, ठीक है। ऐसे ही बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर यू हैव अ प्लांट हेड ऑफ प्लांट हेड, देन यू हैव वर्कशॉप हेड, प्लांट plant shop, sorry, paint shop head, and then machine shop head, welding shop head. Then after that there is a GM, DGMs and all that, and managers, वो सारा काम देखते हैं। मैंने अपने कॉलेज की एग्जांपल इसलिए ली क्योंकि आपने देखा है, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे काम। डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट इज प्लानिंग द गोल एंड एस्टेब्लिशिंग द स्ट्रेटजी। जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था कि जो मैनेजमेंट है, कॉलेज का जो चेयरमैन है, वो डिसाइड करता है मेरे को आने वाले 5 साल में क्या चाहिए, कॉलेज में क्या चाहिए। जो रिसेंट, जैसे आपको बता रहा हूँ कि दैट नाउ द कॉलेज इज अप्लाइंग फॉर A+ ग्रेड, नैक A+ ग्रेड, तो एक डिफाइन हो गया गोल के वी वांट एटलीस्ट A++ और A+ नैक, एक गोल है। तो उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड डिटरमाइन व्हाट टास्क हैज टू बी डन, उस चीज़ को हमने प्लान कर लिया है कि हमें एक नैक A+ ग्रेड लेना है, तो कैसे हो पाएगा इसके बारे में ऑर्गेनाइज करना। देन स्टाफिंग, यू नीड टू, ऐसा कुछ अगर आप सपोज ये नैक A+ की ये करें बात करें, और इसके अलावा अगर आप हम बात करें, जैसे मैंने सुबह बोला, लेकर अगर मैनेजमेंट सोचती है कि मैंने यहाँ पर डिप्लोमा लेके आया, तो उसके लिए स्टाफ भी चाहिए होगा, ठीक है, नए बंदे चाहिए और नई नई फैकल्टी चाहिए होगी, तो बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। देन स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, इंक्लूडिंग मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टिंग द एक्टिविटी। फिर स्टाफ रख लिया, इसके बाद उनको मोटिवेट, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, डायरेक्ट करना है काम के लिए, ये काम करना है। कंट्रोलिंग, देन प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस, हर एक प्रोसेस को मॉनिटर करना है कि कैसा काम हो। कोऑर्डिनेशन, नोट सेपरेट फंक्शन बट इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वर्क लिस्ट फंक्शन, तो सबके साथ कोऑर्डिनेट भी करना है, राइट। लेट अस टेक अ पोल, another poll,
Okay. Some of the students are saying that I was muted. So I am going to start the planning again. Planning is decided. Planning is decided in advance what is to be done. When a manager plans to, he projects a course of action for the future, attempting to achieve a consistent and coordinated structure of operation aimed at the desired result. So whatever we want to do something, there has to be some planning for that. So planning in advance, what is to be done. Suppose we want to increase the production capacity of a particular plant. Suppose we want to increase the production capacity. Earlier it was 50 and you want to increase it to 100 capacity, 100 parts. Then you need to have that number of fixtures required, number of welding equipment required, number of that uh, number of parts that are involved in doing that. वो उसके regarding planning करनी पड़ेगी. Then you can achieve that target. There are some number of advantages or number of importance of planning. First importance of planning is planning increase efficiency. If you plan something, it will increase its efficiency. Planning makes optimum utilization of all available resources. It helps to reduce wastage and avoid duplication of the work. तो अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज करेंगे. अगर विदाउट प्लानिंग करेंगे तो वो हमारे रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं हम कर पाएंगे, तो उससे वेस्टेज बढ़ेगी. You want to do something, suppose you want to prepare for your final exam. So if you plan something, I will complete my first chapter in that much time, then I will complete my next chapter in that much time, and so on. Then you can do it on a time without wasting your time. On stipulated time में भी कर पाएंगे आप, और better तरीके से भी कर पाएंगे. Planning reduce business related risk. When you plan something, you forecast something. Now as this is this current scenario, everybody looking for a car that is SUV, actually compact SUV or SUV. So you forecast a plan. Say, I will increase the production of, say, we will launch a car which is SUV. Hyundai thinks SUV that is under 10 lakh and cheaper for the people also, and looks like a complete SUV. So this is the planning that you need. So business related risk कम हो जाते हैं. आपने plan किया, market study किया, people most of the people are looking for a SUV and you start making a SUV on that basis. So risk कम हो जाते हैं. Planning provides direction. Direction means to give proper information, accurate instruction and guidance. Information क्या है? Planning provides direction. Information क्या है? You take information from the society that you talk to 10% and out 10 out of these 10, 6 people say I like SUV car. One of them say I like compact car. Some of say I like sedan car. So you go with the majority information you have collected from the society. Accurate instruction, clear-cut instruction should be given to the design engineer, and guidance. What type of if you are talking about SUV, what type of SUV you are planning. It helps the organization achieve the goal through systematic coordination of the employees. Planning encourages creativity and innovation. Now, planning also encourages creativity and innovation. How? Planning helps the manager to express their creativity and innovation. It brings satisfaction to the manager and eventually success to the organization. You just tell them that you need a SUV and that can beat Creta and Brezza. Suppose Renault works on this and brings it a good SUV by the creativity of their design engine. Planning helps in motivation. If you plan something and if you accomplish that plan, that helps or that increases your motivation. Your employees will get motivated
and they will work hard for that. Both manager and employee. These incentives motivate them to work hard and achieve the big objective of the organization. Planning helps in decision making. A manager makes many different plans, then they evaluate every course of action and choose the best strategy. Anything you want to achieve, you plan different plans for that. You can achieve it. Suppose you want to achieve 100 target, which is already 50 is already on the table, and you want to achieve 100, the target of 100 parts. So that 100 parts can be achieved by number of ways, and number of different plans can be made to achieve that. And then you evaluate all these plans and choose the best out of them. Then planning helps to achieve objectives. Planning helps to achieve objectives. Without planning, each and every activity will be based on trial and error, which will give rise to confusion. Suppose you don't plan anything and you go for some project. Suppose you go for some construction of a building. You don't plan anything and you straight away go for a construction of a building. You will get confused after some time if you don't plan something. You have to plan for at what time you will complete your foundation, at what time you will go for the slab work, and what time you will go for the flooring and all that, like that. So that planning should be done. Planning provides basis of control. Planning is the first function of the management. The other functions like organizing, staffing, direction, controlling are organized for implementing plans. Controlling record the actual performance and compare it with the standard set. In case of performance less than standard set, then deviations are ascertained and proper corrective measures are taken to improve the performance and safety. Planning and control both are dependent on each other, and planning establishes standards for controlling, and therefore planning is necessary for effective, efficient functioning of every organization, irrespective of the size and size. You planning is very important. आप कोई छोटा सा काम भी ले लो. Suppose you want to arrange a party for your house or for a birthday party for your friend's house. If you don't plan that, it will make a hodgepodge. So planning is very important in any of the process or industrial application. कहीं पे भी planning is very important. Steps in planning. तो किसी चीज को प्लान करना है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है. Establishing verifiable goals. The first step in planning is to determine the enterprise objective. These are more often set by upper level managers. Objectives may vary from desired sales volume, growth rate, development of new product. जैसे मैंने बोला कि एक पहले कोई गाड़ियाँ 50 बन रही उसको 100 करना है, ग्रोथ रेट इंक्रीज करना है, सेल्स को बढ़ाना है. आप जैसे जेसी मोटर्स हैं 100 फुट रोड पे, वो पहले अगर रोज की एक गाड़ी बेच रहे हैं, दे मे हैव अ टारगेट टू इंक्रीज द सेल्स बाय 2 cars or 3 cars per day. So this is the verified goal. And establishing planning premises. Plans are made to operate in the future. The second step in planning is to establish planning premises. Assumptions on the basis of which plans will be ultimately formulated. Planning premises are vital to the success of the planning as they supply important facts and information related to future like population trends, economic conditions, production costs, and government control. Then deciding the planning period. Now, next task is to decide the period of plan, where it is clear yearly plan which is separate for longer span of time. Choice of planning period is decided based on time required in development of new products.
time required to recover capital investment and some of the commitment already made. Now, you may have heard about the academic calendar of our college. Generally, we do it for a semester. Last 2 years, that academic calendar has been destroyed by corona. At कह लो कि बिल्कुल खत्म कर दिया उसने academic calendar को. Before corona, we strictly follow our academic calendar. That is already planned before a semester starts. You will get your first sectional at this date to this date. तो उसी डेट के ऊपर आपके फर्स्ट सेशनल हुआ करते थे. सेकंड सेशनल विल बी फ्रॉम दिस टू दिस, तो उसी डेट पे हुआ करते थे. दिस इज दैट टाइप ऑफ प्लानिंग. तो आपको कितने स्पैन के लिए चाहिए? यू आर प्लानिंग फॉर 6 मंथ. ऐसे ही आपको प्लानिंग जो प्लानिंग का पीरियड है वो सिलेक्ट करना है. You want to increase the production of a car from 50 to 100 for how much time? 1 year, 6 months, 1 month, 2 months. That you have to decide. Finding alternative course of action. The next in planning is to search for and examine alternative course of action. For example, products may be sold directly to the consumer by the company salesman or through exclusive agencies. You may have about Amway. They sell their product from straight away. There is no market. You can purchase a product from them. तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर अपने सीधा वहीं से खरीदता है. तो दैट इज, आप अगर प्रोडक्ट सीधा कंपनी से खरीदेंगे या एजेंसी से खरीदेंगे, जैसे जेसी मोटर्स है, आप सीधा कंपनी से लेंगे. इस तरीके से फाइंडिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. Evaluating and selecting a course of action. Having searched for the alternative course, the next step is to evaluate, analyze them in the light of premises and goals, and select the best alternative. This is done with the help of quantitative techniques and operations. तो हमने कौन सा तरीका हो सकता है? जैसे हमने गाड़ी आप डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी लेंगे, आप एजेंसी से लेंगे, आगे एजेंसी से सब एजेंसी की गाँव में खुली होती हैं, तो वहाँ से लेना चाहते हैं, तो कहाँ से किस तरीके से सेल्स आपने पैटर्न क्या फॉलो किया, तो उसमें से बेस्ट फिर आप कौन सा फॉलो करते हो. दैट इज सेलेक्टिंग दैट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम दिस. इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन हैज नाउ टू बी इम्प्लीमेंटेड. जो आपने प्लानिंग में अभी तक किया है, उस प्लान जो आपने फाइनल सेलेक्ट किया है उसको इम्प्लीमेंट करना है. पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन. फॉर दिस the manager have to develop derivative plan for each department. A draft version of the action plan should be communicated to inform those directly affected and gain their cooperation. Right? तो जो प्लान हमने सेलेक्ट कर लिया उसको अपने डिपार्टमेंट के अंदर सर्कुलेट करना है. जैसे हम एक academic calendar बनाते हैं. That academic calendar is being circulated among the different departments, and department follow that this academic calendar strictly. तो उस तरीके से काम करता है. Then measuring and controlling the program. The process of controlling is critical part of any plan. Managers need to check the program of the plan. Follow up. कुछ प्लान हमने इम्प्लीमेंट ऊपर से हमें academic calendar आ गया. This much from this date to this date you have to conduct your first sectional. Then controlling is checking whether it has been done by the department or not, by the principal. उसको check करना है. That is controlling. Follow up so that they can take remedial action of the plan. It is not working as per schedule or change the original plan. That is unrealistic. जैसे कोरोना टाइम में that academic calendar has become unrealistic, then that plan has to be changed. A new plan is generated. Online teaching or timetable. When you were here in month of Feb, the timetable was different. When you are at home, the timetable was different. The plan has to be changed accordingly. Then there are different types of plan.
objective plan, strategic policies, procedures, programs, rules and budget. तो आज हम plans cover कर लेते हैं, उसके बाद organization next मंडे को करेंगे organization. तो पहला objective may be defined as a goal which an organization tries to achieve. Objectives are the end towards which the activity of the enterprise are aimed. Objective provides direction to various activities served as a benchmark of measuring the efficiency and effectiveness of the organization. Objective may be the 100% placement of the student. Second objective can be if you are in the automobile sector, we want to sell our car. If you have a previous sales of 5 cars per week, you want to increase to 10. That is objective for different agencies. Strategies. A strategy is a special kind of plan formulated to meet the challenge of the policy or the competitors. Strategy can be shaped by the general force operating in the industry and the economy. Strategy must be consistent and external environment. So, as you know, that Hyundai and Maruti are in competition, so they keep on changing their strategies to sell their products. So strategies को change करते रहते हैं. जैसे now Swift car is being launched in CNG version just to boost up their sales of Swift and Swift Desire. Policies may be described as a plan which are meant to serve as a broad guidelines to decide to decision making in a firm. Policies exist at a various levels of enterprises. A policy should be definite and positive and clear. Policy is a standing plan which assists decision making and should referred as a general statement of established rules. So policies क्या है? We have some rules in an industry. You can come to the industry at 9 and you can leave the industry at 6. If you enter, you are given a card with the card and your card having card and you enter inside the gate of that building. So you are marked present once you enter the gate of that premises. So there are fixed rules for stay, for leaves. आपने छुट्टी लेनी है किसी इंडस्ट्री के अंदर. There are fixed rules. So you have to apply it online and all that like that. Then अगर आप 10 मिनट लेट आते हैं, 15 मिनट लेट आते हैं, उसकी पॉलिसी बनी होती है. इस तरीके से दैट इज अ पॉलिसी. Procedures. Procedures lay down the manner or method by which work is to be performed in a standard and uniform way. Procedure is a standing plan acting as a means of implementing plan. तो पॉलिसीज हमने बना दी हैं. अगर आप 15 मिनट लेट आएंगे तो आपकी हाफ डे कट जाएगी एंड सो ऑन. तो उसका प्रोसीजर फिर आपको 9 से 6 तक काम करना पड़ेगा. दैट इज द प्रोसीजर ऑफ दैट. Sales department lays down a policy to execute all orders within 48 hours. So procedure has to be followed. Chronological system to fulfill the order. So programs are precise plan which needs to be made to discharge a non-repetitive task. The essential ingredients of every program are time phasing, budgeting. Specific date should be laid down for completion of each successive stage of a program. Enterprise has a program of opening 5 branches in different parts of the country, so they have to allocate funds and time period for. जैसे let us take an example of some life insurance company. They want to have some 5 branches in Amritsar or say 5 branches in Punjab. तो उसके लिए फिर वो necessary funds and all that की सारी arrangement करनी है. Recruitment of personnel arrangement, supply of goods and all that. Rules are explicit and statement that tells the members of the organization what they can and cannot do. Suppose in some industry it is not allowed that you can go outside
the premises of an industry from 9 to 5. So this becomes a rule. You have to follow that rule. You have to be a uniform from 9 to 5, and these are some of the rules they have to follow. Budgets are the plans for future product period of time containing statement of expected results in numerical terms. Budgets are very useful for an enterprise being expressed in numerical terms. They are facilitate comparison of actual results with the planned ones and serve as a controlled one. Important budgets are sale budget, production budget, cash budget, and revenue. So we will do it after this. We will again